आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग A to Z ऑफ अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट करियर। लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi everyone, welcome to Insider Gyan. मेरा नाम सौमी है. I am an IIT Delhi and ISB Hyderabad grad, and on this channel I share a lot of my career experiences. I share a lot about MBA, different types of MBA careers. So if all of that is something that you are interested in, please consider subscribing to the channel. और उसी से related आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे everything about the product management career. Product management ना एक बहुत ही sought after field है, role है after someone has done an MBA. And even on this channel, as I've discussed, consulting, investment banking, I have got a lot of requests for people to cover product management. So here I am doing so. So इस वीडियो को मैंने 5 parts में divide किया है. Number 1 is we are going to discuss what does a role of a product manager entail. करता क्या है product manager, right? Number 2, प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत है, सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स भी, एंड किस तरह के प्रोफाइल के लोगों को एक्चुअली प्रोडक्ट मैनेजर के रोल के लिए सिलेक्ट किया जाता है. Number 3 is we are going to discuss how you can get into a product manager role. What are the different interview rounds? What are the different interview questions, etc. Fourth is what does a typical day in a life of a product manager look like? And fifth, what is the typical salary and what are the exit options? So let's get started with part 1. Product manager का role क्या होता है? So बहुत ही simplistically बताओ तो product manager is basically the end-to-end owner of any product that a company sells. Very simplistic term, but what does end-to-end mean? किसी भी product को manufacture करने के लिए सबसे पहले तो आपको जानने की जरूरत है कि customer needs क्या है, right? What are the issues that the customers are facing and what exactly do you have to make the product for? So customer research, business side से लेके actual product development तक, what do the customers want? What price point can you sell the product for? ये सब चीजें तो हो गया थोड़ा बिजनेस साइड में. अब जब ये सब चीजें डिटरमिन हो चुके होंगे तब प्रोडक्ट मैनेजर का रोल होता है टू वर्क विद द डेवलपर्स और एक्चुअल whoever is building the product, to work with the developers and build in some of those features which the customers want into the product, to keep testing the product, to do customer testing of the product, see how to convert the customer needs into business requirements in first place. UI UX डिजाइन, मतलब एक ऐप अगर बन रहा है तो उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए टू मेक इट मोस्ट कस्टमर फ्रेंडली. ऑल ऑफ दैट द प्रोडक्ट मैनेजर लुक्स आफ्टर एज वेल. आई मीन वो खुद ऑब्वियसली ये सब कुछ नहीं करता. हर एक चीज के लिए प्रोडक्ट मैनेजर के पास एक एक डिविजन होगा विच द प्रोडक्ट मैनेजर विल हैव टू सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेट एंड टेक केयर ऑफ. उसके बाद जब प्रोडक्ट बन गया, मार्केटिंग कैसे होगी उस प्रोडक्ट की, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी उस प्रोडक्ट की, व्हाट इज द गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी गोइंग टू बी, एंड वंस द product is out into the market, managing the performance of the product, कि if the product is actually making money for the company or not, P&L कैसा लग रहा है, unit economics कैसा लग रहा है, customers कैसे react कर रहे हैं, are there any issues that the customers are facing, and if so, how you can make the product better by incorporating the customers' issues. So basically, एक product manager ये सारी aspects देखता है एक product की. Now, depending on how big the company is, of course, there can be one product manager who is responsible for all of this, or there could be a huge team that a lead product manager has to deliver one specific product. A product manager could also have sub product managers. एक अगर product है उसके sub products है, उसको build करने के लिए हर एक छोटे छोटे एंटिटीज के लिए एक एक प्रोडक्ट मैनेजर होगा. सो स्ट्रक्चर्स कैन वेरी, बट एसेंशियली दिस इज व्हाट अ प्रोडक्ट मैनेजर डज. दिस इज द रोल. अब होता ये है ना कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज नॉट अ वेरी न्यू फील्ड. लाइक देयर हैव बीन प्रोडक्ट मैनेजर्स फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इन द पास्ट एज वेल, बट विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द लास्ट फ्यू years, product manager has become very very sought after. When we say product management, typically these days it refers to a tech product, basically like a Google Pay or maybe an iPad or something like that. So just to give you an example, Apple के अंदर iPhone के लिए एक product manager होगा. Now
आईफोन में बहुत सारे छोटे छोटे मूविंग पार्ट्स है, राइट, लाइक द कैमरा, द सॉफ्टवेयर, द हार्डवेयर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उन हर एक एंटिटीज के लिए भी एक एक प्रोडक्ट मैनेजर हो सकता है। सिमिलरली Amazon Kindle is going to have its own product manager. Even softwares like Google Pay or Apple Pay have their own product managers. वैसे तो ये products already launch हो चुके हैं, but there are still product managers who keep an eye out for how the customers are reacting. Are the customer preferences changing in any way? If so, then how do they make their product better by incorporating those kind of things, etc. Now moving to part 2 of the video, which is the skills required, और किस तरह के profiles को select करते हैं product manager role के लिए. So the number one skill required is a soft skill, and that is stakeholder management. जैसे कि मैंने बताया, एक प्रोडक्ट मैनेजर बहुत कुछ करता है, राइट, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड। नाउ ये सारी चीजें वो अकेले तो नहीं करता, उसके पास हर एक चीज के लिए लाइक गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी के लिए एक टीम होगी, मार्केटिंग टीम होगी, उसकी फाइनेंस लाइक बिजनेस केस बनाने के लिए प्रोडक्ट की एक और टीम होगी, प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए बहुत ही बड़ी डेवलपर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड प्रोग्राम मैनेजर्स की टीम होगी, कस्टमर साइड बिजनेस साइड को देखने के लिए एक टीम होगी। सो अ प्रोडक्ट मैनेजर इज बेसिकली अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑल ऑफ दीज एंटिटीज, राइट, ऑल ऑफ दीज स्मॉल स्टेक होल्डर्स। सो नेचुरली दिस पर्सन नीड्स टू हैव वेरी 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 गुड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट स्किल्स। उसको सबको लाइन में रखना है, लाइक इफ ही हैज अ टारगेट, द प्रोडक्ट मैनेजर हैज अ टारगेट टू रिलीज द प्रोडक्ट इन अ स्पेसिफिक डेट, he has to break it down like step by step for each of the teams, and then each of the teams need to deliver within their timeline. उसको देखना है कि सब लोग टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं, किसी भी एक टीम में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो हाउ टू मैनेज दैट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। अदर सॉफ्ट स्किल्स की बात करूँ तो नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, उस तरह की चीजें। The second skill you would need is a hard skill, which is a basic understanding of the product development cycle. Now, जैसे कि मैंने बताया कि आजकल product management काफी synonymous हो गया है to tech products, right? And tech product development का एक set process होता है. Usually आजकल agile methodology follow करते हैं लोग. So, if the product manager has a bit of an understanding of the tech development life cycle, then his or her life is going to be much easy. So, things like, sprint planning, कि एक feature डेवलप करने के लिए कितने स्प्रिंट्स चाहिए, स्प्रिंट्स के अंदर भी सो फर्स्ट द प्रोडक्ट नीड्स टू बी डिजाइन्ड बाय डिजाइनर्स, सो यूआई यूएक्स फ्रेंडली होना चाहिए, कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलप होगा एंड देन देयर इज थिंग्स लाइक यूजर टेस्टिंग, देयर आर थिंग्स लाइक सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, थिंग्स लाइक हाउ टू एक्चुअली कन्वर्ट बिजनेस रिक्वायरमेंट्स इनटू टेक्निकल डिजाइन फीचर्स व्हिच आर इजी फॉर द डेवलपर्स टू डेवलप। तो इस तरह का अगर थोड़ा सा आइडिया है प्रोडक्ट मैनेजर को अबाउट द टेक डेवलपमेंट साइकिल, उसकी अपनी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि उसको आइडिया होगा कि कितना टाइमलाइन अलॉट करना है प्रोडक्ट्स के लिए, किस तरह से डेवलपर्स लाइक काम करेंगे, वो सब भी उसको समझना आसान होगा। द थर्ड स्किल इज अनदर हार्ड स्किल व्हिच इज अ स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस साइड ऑफ अ प्रोडक्ट। नाउ नेचुरली कस्टमर्स की नीड्स को समझना बहुत जरूरी है, एंड वंस द कस्टमर नीड्स आर डिफाइंड, द बिजनेस केस, द P&L ऑफ द प्रोडक्ट, उसको समझना भी जरूरी है, उसको डिफाइन करना जरूरी है। ओवरऑल ये एनालाइज करना जरूरी है कि ये जो प्रोडक्ट है इसको मैन्युफैक्चर करके लॉन्च करना बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं, और होगा तो लाइक कितना रेवेन्यू ला पाएगी वो प्रोडक्ट, कितना प्रॉफिट ला पाएगी, एक्सेट्रा। इसलिए बिजनेस सेंस बहुत जरूरी है, एंड नो वंडर most of the product managers that you would see these days for bigger companies are actually MBAs. Fourth skill that will be needed is critical thinking and analytical skills. I think ये काफी generic हो सकता है, but basically एक product को market में लाना is definitely a very strategic kind of a decision, right? You have to define the product strategy, and you have to do a lot of analysis and calculations, etc. The situations are very ambiguous. आपको अगर कोई एक consulting के जैसा ही आपको जैसे customers को कोई issue face हो रहा है, उसको आप किस तरह से थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके एक प्रोडक्ट में डिफाइन करोगे, इन सब चीजों के लिए क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल आउटलुक की जरूरत बिल्कुल है। टेक एप्स अ लॉट ऑफ टाइम्स दे आर वेरी कस्टमर फेसिंग, राइट? जैसे कि आप एक बैंक के ऐप में लॉग इन करना चाहोगे तो उसका लॉग इन का बटन कहाँ पे आ रहा है, इज इट यूजर फ्रेंडली और नॉट, मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, आपके कॉम्पिटिटर्स किस तरह से इस चीज को हैंडल करते हैं। सो इन सब चीजों को समझने के लिए एक जनरल आउटलुक एंड basic level of critical thinking and analytical skills चाहिए, which is also a reason why case interviews are quite common in a product management role as well.
अब अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं कि किस तरह के बैकग्राउंड के लोग प्रोडक्ट मैनेजर रोल्स में जाते हैं, वैसे तो कई सारे बड़े कंपनीज जो है वो कंसल्टेंट्स को भी हायर करते हैं एज प्रोडक्ट मैनेजर्स, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बिजनेस बैकग्राउंड दैट कंसल्टेंट्स ब्रिंग, because they have a good business knowledge, they would have already done a lot of projects on customer research, they're good with business cases, etc. But more or less they're also good with like prioritizing things, time management, stakeholder management, etc. But only those who would have had a relevant experience, say for instance उन्होंने tech media telecom like TMT sector में काम किया है, maybe Google was one of the clients, तो Google या Google के जैसा ही कोई कंपनी उसको एज प्रोडक्ट मैनेजर हायर कर लेगी। एंड यू नो, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोडक्ट मैनेजर के इतने सारे रोल्स है, तो कई बार कंपनीज क्या करती है, डिफरेंट एक ही प्रोडक्ट के लिए 4-5 प्रोडक्ट मैनेजर भी रखती है, हु आर ऑल रिपोर्टिंग टू अनदर लाइक सीनियर पर्सन। सो डिपेंडिंग ऑन आपकी कंसल्टिंग में क्या रोल है, आपको हायर किया जा सकता है। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स MBAs आर ऑब्वियसली प्रेफर्ड, लॉट ऑफ हायरिंग फॉर प्रोडक्ट मैनेजर्स हैपन directly from the business schools, to be very honest. And if there are people who have had pre-MBA work ex in software engineering, in tech consulting, who understand product development cycle, ऐसे लोग तो बहुत ही आसानी से प्रोडक्ट मैनेजर रोल में शिफ्ट हो जाते हैं। बाकी अगर कोई इंसान प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम कर रहा है या फिर टेक स्पेस में काम कर रहा है, वो भी आगे बढ़ते बढ़ते प्रमोट होते होते कभी ना कभी बिजनेस साइड या प्रोडक्ट रोल में, प्रोडक्ट मैनेजर रोल में शिफ्ट हो तो सकता है, बट दोस पाथ्स आर रेयर आई वुड से, एंड ऑल्सो वुड टेक लॉन्गर टाइम देन इफ यू डू एन MBA। प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाला वीडियो जब मैं पहली बार शूट कर रही थी ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पार्ट 3 है वो मैंने मिस कर दिया था, सो शूटिंग इट लेटर। पार्ट 3 इज ऑल अबाउट व्हाट डू दे आस्क यू इन द इंटरव्यूज एंड हाउ डू यू हैंडल देम। सो इंटरव्यू में, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के इंटरव्यू में 2-3 तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड द फर्स्ट वन इज केस इंटरव्यूज, बिकॉज केस इंटरव्यूज तुम्हारी एनालिटिकल थिंकिंग एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग को टेस्ट करती है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स नॉट अ स्ट्रैटेजी काइंड ऑफ अ केस बट मोर ऑफ अ प्रोडक्ट केस, बट उसको सॉल्व करने के लिए आपको अप्रोच नॉर्मल केस इंटरव्यू के जैसा ही लगाना है। अगर एक आप अच्छा फ्रेमवर्क बना लेंगे देन इट इज गोइंग टू गेट easier for you to solve the case. So case interviews are number 1. Secondly, there's also a behavioral round, especially because tech companies have all these principles. जैसे Amazon के 12 principles है, I think Facebook के 6 या 7 principles है, Google के 3-4 values है, 5 values है, जितने भी है, but a lot of these tech companies have these principles which they want to test you on. So behavioral round बहुत important हो जाता है. They'll ask you different kind of instances from your past work ex, and if you're a fresher then maybe from your college life, how you have handled different situations, examples of failures, conflicts, etc, etc. And one important tip I'll give you is जब भी आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट के इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो उस कंपनी के प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज को बहुत अच्छे से समझे, एंड जब आप बिहेवियरल क्वेश्चंस प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके जो आंसर्स है उसको, वैल्यूज को ध्यान में रख के फ्रेम करो, लाइक पिक अप suitable examples which can display those values for you in the interview. Lastly, product management में if you're not a fresher, they'll also deep dive really into the depth of what you have done in terms of product management in the past. पहले के कंपनीज में किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपने हैंडल किए हैं, बिकॉज प्रोडक्ट मैनेजमेंट हम काफी लूजली ना कई तरह के रोल के लिए यूज कर लेते हैं। समटाइम्स इट्स अ टेक साइड प्रोडक्ट मैनेजर, समटाइम्स इट्स अ बिजनेस साइड product manager, sometimes it's junior versus senior, different kind of things you would have done. So they really want to go into the details of what kind of projects or what kind of products you have handled in the past, and also what are the exact roles that you had played in bringing those products into the market. Now moving back to part 4. What does a typical life in the day of a product manager look like? जैसे कि मैंने बताया, प्रोडक्ट मैनेजर को काफी सारे टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, ओके? सो यू कैन एक्सपेक्ट अ हेवी पार्ट ऑफ योर डे टू बी जस्ट गोइंग ऑन कॉल्स आफ्टर कॉल्स आफ्टर कॉल्स, एंड लेस ऑफ एक्चुअल वर्क ऑन से ऑन अ पावर पॉइंट डेक और अ गूगल डॉक, राइट? प्री प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में मे बी आपका काफी सारा टाइम जा रहा है टू वर्क विद थर्ड पार्टीज और वर्क विद इंटरनल बिजनेस साइड पीपल ओनली हु आर डूइंग कस्टमर रिसर्च। आप देख रहे कि आप उनको अटेंड कर रहे हैं, कस्टमर रिसर्च इंटरव्यूज अटेंड कर रहे हैं। देन व्हेन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट्स, अ लॉट ऑफ योर टाइम विल गो इनटू सिटिंग विद द डेवलपर्स फॉर स्प्रिंट प्लानिंग सेशंस। आपको उनको बहुत टाइमलाइंस देना पड़ेगा, सो अ लॉट ऑफ कॉल्स, एंड एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोडक्ट टू योर सीनियर्स, लाइक द लीडरशिप ऑफ द कंपनी एज वेल। सो थोड़ा सा उस एंगल में आपको एक्चुअल
like deck work या कुछ written work या email work करना पड़ेगा. But more or less it's about coordinating and getting things done basically. And at the end of the day in a life really varies from level to level also. Like also what kind of a product manager you are. If you're a tech product manager, then you will be working more closely with the developers. If you are on the business side of product management, then you will be doing more of customer research, etc. If you are a junior person, then you will probably be managing a lot of tasks and maybe creating Gantt charts for your developers as well. If you're a senior person, then you will probably be creating some PowerPoint decks to report about the progress to your leadership, etc. Coming to the last part of the video, which is salaries and exit options. सबसे पहले exit options की बात करते हैं. Honestly, product management, especially in the tech field, is काफी new, right? So there are not a lot of proven exit options yet. Maybe next 30 to 40 years में और बहुत ज़्यादा proven examples होंगे हमारे पास कि लोग product management से कहाँ पे जाते हैं. But typically, if I tell you, a lot of people prefer to stick within product management. They would probably move to another product manager role in a better company or in a senior position. And that is also because product management, पहली बात तो it's a good career for the future. And secondly, also people who get into this field, they get used to the good lifestyle, the good money, the kind of work that they're doing as well. You're also creating a lot of impact that way. And your work hours are not terrible. Like it's not like consulting जहाँ पे आपके पास बहुत pressure होगा. Maybe 1 or 2 weeks a month जब आपका product launch हो रहा है या कुछ बड़ी meeting है तब आपके पास थोड़ा pressure होगा. But typically it's not that bad a role for the kind of money that you get paid. So not a lot of people like to move out of this field in first place. In fact, a lot of people from other fields want to get into product management. But also, अगर examples हम देखें तो a lot of product managers move on to build their own companies of tech products because इस बंदे को end-to-end product बनाना कैसे है लेके sell कैसे करना है उसको सारा चीज का idea है, right? So it's precisely managing one small business in their role itself. So it's easier for these people to sort of develop another product and build a startup if they have a cool idea. A lot of product managers would also become advisors or consultants to different startups. Some people could also join venture capital firms or PE firms who focus on the kind of products that these guys have worked in, etc. And lastly, अगर salaries की बात करूँ तो I'll give you a few numbers that I found from the internet and I have collected from my chats with my friends as well. Honestly, salary obviously depend करता है कि आप किस कंपनी पे है. बड़ी companies pay you a lot more and छोटी companies will pay you lesser. It also depends on what level you are as a product manager. But typically, while entering the field from a good business school, your salary would be in the range of 25 to 28 lakhs per annum easily. Let me read out a few numbers that I have found from internet on Glassdoor actually. Average PM salary in Glassdoor in India is actually 15 lakhs per annum. But that, like I said, includes all kind of products and all kinds of companies. Smaller companies would obviously pay you less. A few company-specific numbers from Glassdoor. Paytm has an average product manager salary of 22 lakhs per annum. Flipkart, 25 lakhs per annum. Amazon, 28 lakhs per annum. Microsoft is 30 lakhs per annum and Ola 28 lakhs per annum. So as you can see, it's quite a well-paying field, and obviously as you graduate, as you become senior, you get paid even more with not a lot of work pressure. I mean, there is pressure, don't get me wrong, but it's not as intense as a consulting or an investment banking job. So that's all I wanted to cover in this video. Hope आपके कुछ doubts clear हो गए हो product manager role के बारे में. अगर और भी कोई question है, please let me know in the comments. Someday maybe I'll try to bring one of my friends on air to share their experiences about product manager. But right now I haven't found anyone who is comfortable sharing their experience on camera. So that's why I made this video myself. Hope you liked it. If you did, hit the like button. Please subscribe to the channel if you haven't already. And I'm going to see you in the next one. Till then, bye.